Right, our top story, and starting with election news now, the Telangana Congress has in fact revealed that they are pitting Revanth Reddy, the state Congress chief, against KCR in the upcoming state elections. And for more on this, let me go across to my colleague Uma Sudhir. Uma, so was this on expected lines that Telangana Congress is actually pitting their most heavyweight candidate against the chief minister? Yes, indeed. Telangana Congress Chief Revanth Reddy otherwise filed his nomination papers today from Kodangal. But he has been saying, and yes, the Congress has been saying that he is going to be taking on the Chief Minister KCR in Kamareddy. KCR himself has, in fact, his original seat is Gajwel, where he is being challenged by BJP leader Itela Rajender, who happened to have been working as minister in KCR's cabinet and was moved away and subsequently won by-election in Huzurabad. He is going to be challenging the chief minister as a second seat in Gajwel. So you have these top heavy, these leaders, the top leaders, whether it is KCR or Revanth Reddy, the Congress chief, or Itela Rajender, who is a big leader of the BJP, all of them fighting in two seats, and KCR facing challenge from top leaders in both Gajwel as well as Kamareddy. So the third list has other interesting highlights. What I must point out is that the Congress was meant to have talks with both the CPI and the CPM and try to get some seat adjustments so that they don't split the anti-incumbency vote. But those talks did not seem to go very well. The CPM had in fact gone ahead and announced its own list of candidates. But this evening, after filing his nomination, Revanth Reddy went to the CPI office and had talks, and subsequently it is now understood that possibly they'll be giving them one Kottagudem seat and also allow them to and also promise them two MLC seats after the election. So in that sense, that anti-incumbency is taken care of, splitting the anti-incumbency. But two other names which are announced for Vanaparthi and Boath, those names have been replaced. Mohammad Shabir, otherwise from Kamareddy, is now being fielded from Nizamabad Urban. Uma there, thank you for joining us with those details. And as we know, it's just a few hours to go for the mega battle of the states, which begins from Tuesday. Now it's Chhattisgarh's first phase of elections, and very significantly Bastar, the Maoist hotbed in Chhattisgarh, which is going to polls on Tuesday. And Mizoram, of course, as we know, it will be a single phase elections which takes place on Tuesday as well. So the big battle, the semi-final battle as it's being touted ahead of 2024, begins from Tuesday in a few hours. And very importantly, just hours ahead of the elections in Chhattisgarh, there was a blast which took place close to a polling booth around 1500 meters from a polling station in Kanker district of Chhattisgarh. One Jawan and two polling staff have sustained injuries, but what we are being told is that these are minor injuries, and all three of them are being treated. Right, and on to an NDTV exclusive. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has filed his nomination, of course, as we know, and just shortly after that, he spoke to my colleague Sumit Awasthi and in fact said that amid all the buzz about faction war, he asserted that Rajasthan Congress is fighting unitedly in this election. Listen in. हमने एक बहुत अच्छा कैंपेन देखा था हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, पूरी पार्टी साथ दिखाई देती थी। यहाँ पर होगा एक साथ सब सारे राजस्थान के नेता एक साथ एक मंच पर, एक ही सब एक मंच पर, आप और सचिन पायलट के साथ सभी एक मंच पर है। वहाँ पे खड़गे जी भी हैं, वहाँ पे राहुल गांधी भी हैं, वहाँ सोनिया गांधी भी हैं। देखिए हमारे यहाँ सब एक मंच पर है, बीजेपी में बिखराव है, हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ बिखराव है। विपक्ष में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है या सत्ता में रह के चुनाव लड़ना आसान होता है? 18 में आप विपक्ष में थे तो आप चुनाव जीत गए, आपकी सरकार बन गई, आप मुख्यमंत्री बन गए। अब आप सत्ता में रह के चुनाव लड़ रहे हैं, और आप जब सत्ता में रह के चुनाव लड़े तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है गहलोत साहब। आप ठीक कह रहे हो, पर एक ये भी देखना पड़ेगा आपको, इस बार जो है इस बार माहौल दूसरा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ केरला का। केरला में 76 साल में लगातार एक बार लेफ्ट एक बार कांग्रेस जीतती आई है, उनका गठबंधन होता है। वो हमारे 30 साल परंपरा चली पड़ी है, वह 76 साल थी। कोरोना के अंदर अच्छा काम किया सरकार ने, इस नाम से सरकार को रिपीट किया जनता ने, वहाँ की जनता ने इस बार केरला के अंदर। तो हमने तो केरला में
काम अच्छा हुआ कोरोना का। हमारे यहाँ भी उससे कम नहीं हुआ, अच्छा हुआ। हमारा भीलवाड़ा मॉडल तो WHO तक पहुँच गया। जी, आपके तो एक बार खुद प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने तारीफ उनको भी करनी पड़ी, WHO ने तारीफ करी और हिंदुस्तान भर में तारीफ हो रही है। शानदार मैनेजमेंट किया, ऑक्सीजन ने किसी को मरने नहीं दिया, इलाज शानदार हुआ। और उसके अलावा जो 25 लाख बीमा हम लेके आए हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं 5 लाख बीमा होता, वो भी 25 मिनट जनता के लिए होता है। हमारे यहाँ गरीब अमीर सबके लिए बीमा कर दिया राजस्थान के अंदर, एकमात्र राज्य राजस्थान है। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हम लोगों ने। तो आप सोचिएगा कि हमारी जो स्कीमें हैं एक के बढ़ एक, कई क्षेत्रों में हम लोग नंबर 1 है। और तो आर्थिक विकास दर में देश के अंदर बड़े राज्यों में जो है नंबर 1 तो है आंध्र प्रदेश और नंबर 2 राजस्थान है 11.04% GDP। और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं, राजस्थान है। तो हमने वित्तीय प्रबंधन करके दिखाया है, तब जाके 30 स्कीम लेके आ रहे हैं। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ये राज्य जनता जो है वो कई बार मोदी जी को बोलती है तो कई बार आपको भी कहती है। देखिए, तो जनता तो जनार्दन है, उनकी बात सबको माननी पड़ती है। पर देखिए, इनकी जो मेन तो पेट्रोलियम समझ लीजिए आप सेक्टर जो है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब क्या रेट हो गई थी, 112 रुपये तक चली गई थी मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें। तब तो समझ में आती थी कि भाई महंगा पेट्रोल डीजल है। इनके वक्त में आधा हो गया। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, कम नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो एक्साइज ड्यूटी बेसिक होती है उसमें हिस्सा राज्यों का होता है, उसको तो कर दिया जीरो के बराबर कर दिया, मैंने बहुत कम कर दिया। और एक नया लगा दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस 3। उस पर हिस्सा राज्यों का नहीं होता है। लूट मचा रही इन लोगों ने, जनता समझती नहीं इन बातों को। तो समझाइए ना, चुनाव में समझा नहीं बात है, ये समझाते हैं हम लोग। चुनाव है, अभी समझाना पड़ेगा। समझाते भी हैं, हमारा फर्ज बनता है। पर ये बताऊँ मैं आपको कि ये तमाम जो है उसमें हिस्सा नहीं होता राज्यों का, उसमें हिस्सा खाली केंद्र का होता है। तो पूरा केंद्र ले रही है रेवेन्यू, उससे अपना काम चला रही है। एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं जानता हूँ आपका वक्त ज़्यादा हो रहा है। अगले मुख्यमंत्री आपके होंगे जीते तो? इसमें कोई शक मैं जब तो नहीं? शुरू में कह चुका आपको, मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ। मुझे पार्टी ने इतना विश्वास किया मुझ पर, और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी, कांग्रेस प्रेसिडेंट। उसके बाद पहला फैसला उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का किया था जी, 98। तो मुझे अगर विश्वास करके 98 में मुख्यमंत्री बनाया तो मेरी ख्वाहिश तो ये रहेगी कि भाई 2 बार हम जिता नहीं पाए, चाहे मोदी जी की हवा चल गई हो एक बार, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट का बदनामी करा के लोकपाल लेके आएंगे, अन्ना हजारे साहब को बैठा दिया, सब काम इन्होंने किया, रहे सिर्फ बीजेपी नहीं किया उस वक्त में। और मोदी जी हवा चला दी, जीत गए वो, हम लोग हार गए बुरी तरह से। उसके पहले भी कुछ कारण ऐसे रह गए, मैं उन कारणों में नहीं रहना चाहता, पर उस पर भी शानदार हमने काम किया था। तो मेरी तो ख्वाहिश ये रहेगी भी सोनिया गांधी जी ने मुझ पर विश्वास किया पहली बार 98 के अंदर, तो आज कम से कम मैं एक बार उनको सरकार आके दिखा दूं, बस ये मेरी ख्वाहिश है। विनिंग नोट पे जाना चाहते हैं आप? इसलिए मैं जो है चाहूँगा किसी भी तरह से मैं दिन रात काम करूं। जो कुछ मैंने संभव था 5 साल मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मैंने कोरोना के वक्त में, 350 उसके अंदर खाली कोरोना के लिए थी, 500 ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और पूरे 200 MP MLA हमारे पार्टी में बीजेपी सब मिला करके सबसे मैंने 22 घंटे बात करी, धर्मगुरुओं से बात करी, एक्टिविस्ट से बात करी, NGO से बात करी। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरा ये नारा था, और वही हुआ। मतलब तो मैंने बहुत बारीकी से उसकी मैनेजमेंट किया, ढूंढवाए लोगों को। जो ठेले वाले थे, ठेले बंद हो गए क्योंकि लोग लॉकडाउन में बंद थे, तो घर पे वो क्या खाएं। जो लोग रात दिन सो जाते हैं, स्टेशन पर सो जाते हैं, रन बेसम रहते हैं, ढूंढा के 35 लाख लोगों को उनको मैंने DBT करवाई, बैंक में खाते खुलवा करके। कलाकार तो घर में बैठे हुए, कला कौन देखे उनकी, उनको 15,000 रुपये मैंने भेजे। तो एक एक चीज़ को मैंने खुद ने देखा उस वक्त में। तो आप बनेंगे ना मुख्यमंत्री?
ये सब हाईकमांड और कांग्रेस विधायक दल तय करता है और मुझे उसमें विश्वास है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। Shifting focus now to the national capital, and Delhi's air emergency only worsens by the day. And today, the Delhi government was compelled to bring back the odd-even scheme. In fact, the announcement's been made that odd-even scheme will be imposed in Delhi for a week, starting from November 13th to 20th. So this is, of course, taking place at a time when we've seen a record number of farm fires in the neighboring Punjab state, which has impacted not just Delhi but also Haryana. As I mentioned, that the odd-even scheme is going to be invoked from next week. Schools have been told to stay shut till the festival, except for classes 10 and 12. Meanwhile, the national capital region is in fact housing India's most polluted cities in the country. The NCR cities, in fact, are more polluted than Delhi. Top 10 polluted cities in the country are all next to Delhi, all the satellite towns of Delhi. And in fact, as my colleague Parimal found out, that construction ban is in fact being openly flaunted in these NCR cities, where the air quality is much worse, but there are no emergency measures on the ground. नोएडा फेज 2 के सेक्टर 83A में हम हैं और यहाँ पर आप देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी सीधे तौर पर मनाही है। पुलिस साहब ऊपर काम कर रहे थे, हमको देखते ही नीचे आ गए, क्यों? नहीं, टाइम हो गया खाना खाने का। आज काम सुबह से ही चल रहा है? सुबह से चला रहा है 10 बजे तक। तो लग रहा है कुछ गलत हो गया कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि गलत नहीं है, सब ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन करना हर जगह में मना किए तो गलत है। गलत है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। हमारा क्या गलत है सर? हमारा पेट के लिए आया और 10 कमाने के लिए। कंपनी वाला जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। ये अभी कितने लोग हैं यहाँ पे काम करते? 10-15 आदमी हैं बस। और दिन ज्यादा रहते? नहीं, ये बस यही चलता है कब। 10-15 आदमी। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है, बिल्डिंग का। अभी कितना आदमी काम कर रहा होगा? 10-12 आदमी। ये पानी का छिड़काव जो कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? ये लगभग हो गए 2-3 महीने के ऊपर हो गए। लोग तो कह रहे हैं कि कल परसों शुरू किया है। हाँ, मतलब कल परसों तो बाहर किया था चालू, पहले कहीं चल रहा था। अच्छा, कल परसों शुरू किया है, कल से शुरू किया है। हाँ हाँ। इस स्कूल में है और अभी तक छुट्टी नहीं हुई है गाजियाबाद में। केवी में केंद्रीय विद्यालय में। हाँ। छुट्टी की कोई घोषणा नहीं हुई? अभी नहीं हुई। कोई सूचना नहीं आई आपको? नहीं। Time for us to slip into a short break. News and updates will continue on the other side. Welcome back. Now, over 150 lives have been lost in the Nepal earthquake. NDTV's Tanishq Punjabi and Rajesh Gupta report on what's left behind at the epicenter, Jajarkot. Heartbreaking stories of death and despair deep inside Jajarkot, the epicenter of the Nepal earthquake that took over 150 lives. In the Revanth village of Jajarkot, houses lay in ruins. People clearing this rubble told NDTV that 6 family members living in this house died on the night of the earthquake. Urmila lost 2 of her children.
छोरीले बच्चाहरू सबैको मृत्यु भयो Like Urmila, 6 members of Hasti Kumari's family died on one single night, the night of the earthquake. 5 of them were children. 5 का कोठामा बुहारी बीच में बहू सोए थे बच्चे के साथ एक बार माझमा 4 छोरा 4 जना म उतापट्टि 3 बाँच्यौं 2 गइन् 5 पछाडि कोठामा सुत्या थियौं हामी केही थाहा छैन The Beri Nadi, which flows alongside the whole Jajarkot area, is a testament of this whole tragedy and is carrying the tears of those who lost their loved ones. With camera person Rajesh Gupta, Tanish Punjabi for NDTV. And crucial emergency aid has finally started reaching the victims in Nepal. Take a look at this report. हम लोग वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आया उसकी वजह से 200 परिवार के लिए दोनों जिला में 100 परिवार के लिए पूरा सेट पैकेज लेके जा रहे हैं अभी। सो उसमें खाद्यान्न है, पकाने वाला सामान है, खाने वाला सामान है, ऊपर बिछाने वाला इस क्योंकि अभी ठंडी की सीजन चल रही है इसलिए सब कुछ पैकेज 200 परिवार के लिए लेके जा रहे हैं अभी। ये हम और नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलके हम लोग 200 परिवार के लिए खाना और बिस्तरा, बेड बिस्तरा और बर्तन और टेंट करके हम लोग पूरा पैकेज 200 परिवार के लिए हम तैयार कर रहे हैं। International news now, and Donald Trump has testified in the New York civil fraud trial. The $250 million lawsuit alleges that Trump, the former US president, inflated his assets to access better loans. Just ahead of taking the stand, Trump called the proceedings very unfair. These are political operatives that I'm going to be dealing with right now. You have a racist attorney general who made some terrible statements, and you'll see some more that came over the wires today. It's a very sad situation for our country. We shouldn't have this. This is for third world countries, and very unfair. It's very unfair. But in the meantime, the people of the country understand it, they see it, and they don't like it. They don't like it because it's political warfare, as you would call it, or political lawfare. Another name, they got a lot of names for it. But usually it takes place in third world countries and banana republics, and nobody's ever seen that to this extent. We've never seen it here. And Israel's onslaught continues in Gaza, with their forces claiming to have split Gaza in two. US, meanwhile, is pushing for an immediate ceasefire. The ground offensive of the Israeli army in Gaza in full swing. The Israeli military says it has reached the coastline at the south of the Gaza city, effectively splitting the enclave into two parts. היום, כוחות צה"ל, בהובלת סיירת גולני, כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים, בחלק הדרומי של העיר עזה, והם כיתרו את העיר עזה, ובעצם היום יש עזה צפון ועזה דרום. Israeli media reported that IDF troops were expected to enter Gaza city within 48 hours. The IDF troops' movements came after Israeli airstrikes hit two refugee camps in the central Gaza Strip on Sunday, killing scores of people, according to the Hamas-run Health Ministry of Gaza. Reports say that overnight strikes on Gaza were the most intense ever since the war broke out on October 7th. In a rare joint statement, the heads of all major UN agencies expressed outrage at the civilian death toll in Gaza and called for an immediate ceasefire. While the bombardments continue, US Secretary of State Antony Blinken pushed for a humanitarian pause on his second visit to the Middle East in the last 30 days. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reiterated his long-standing position, saying there would be no ceasefire unless hostages kept captive by Hamas are released. With each day,
More intense in terms of airstrikes than the last one, the sorrows of the Gazans don't seem to end. Bureau Report, NDTV. And with that, it's a wrap on the show. Keep watching NDTV.